Good afternoon, everyone. Dear students, welcome to Education World। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन टर्म होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वॉल्यूम कंसंट्रेशन, हम अदर कंसंट्रेशन टर्म होता है वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए होता है वॉल्यूम कंसंट्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जल्दी ज्वाइन कर लो। So, good afternoon। Good afternoon। The students, yes, good afternoon, good afternoon। चलो स्टूडेंट्स जल्दी ज्वाइन कर लो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, students। So I hope most of you already joined। Let's come to the topic। चलो, sir, Jasonpreet sir, please repeat the last question that you discussed yesterday। अच्छा, yesterday का क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Okay, so before going to this, maybe we can discuss, let's me check if they're having these questions or not। Yeah, maybe this is the questions। ये देखो, ये जो क्वेश्चंस क्या बताया था, 20 ml of 0.1 molar aqueous solution of phosphorus acid, the value of 0.1 molar KOH solution required। ठीक है ना। तो ये जो एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो दिस इज जनरली, ये एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट
gram equivalent acid, it reacts with 1 gram equivalent of base, ठीक है ना। तो ये देखो हमने जो देखा था, बेसिकली अगेन इफ यू थिंक अबाउट एसिड और बेस, ओके, जो एसिड और बेस यहाँ पे देखना है, इफ यू थिंक forget about this questions, okay, forget about this questions, you take जो H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, ये कितना रिप्लेसेबल प्रोटॉन है ये देखना पड़ेगा। ओके, सो इसका जो मोलर मास, व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, तो इफ यू टेक 98 ग्राम H2SO4, इसका मोलारिटी क्या होने वाला है इन 1 लीटर, तो क्या होने वाला है इन 1 लीटर, इफ यू टेक 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या इसका मोलारिटी क्या होने वाला है 1 मोलर, ठीक है। बट इसका जो इक्विवेलेंट वेट कितना है, इसमें कितना रिप्लेसेबल प्रोटॉन है वो देखना है। कितना रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, 2 रिप्लेसेबल प्रोटॉन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो ग्राम इक्विवेलेंट वो कितना होने वाला है, इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, this is your the molar mass upon the basicity means number of replaceable proton. तो इसका जो 98 upon 2, ठीक है, so 98 upon 2, so this is your 49 ग्राम। तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट, नाउ in terms of normality what we are having, in terms of normality when you are having the 1 gram equivalent substance, तो क्या होने वाला है, तो उसका जो if you are having 1 gram equivalent substance in 1 liter, 1 gram equivalent in 1 liter, तो उसका क्या होने वाला है 1 liter, that will be one normal solution। Now you see you are having 98 gram H2SO4 in 1 liter, इसका जो मोलारिटी क्या होने वाला है, 1 मोलर। बट इफ यू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, इसका नॉर्मलिटी क्या होने वाला है 2 नॉर्मल होने वाला है, ठीक है, तो 2 नॉर्मल होने वाला है। तो नाउ इफ यू थिंक अबाउट लाइक you are having NaOH, you are reacting with in terms of, you forget about H3PO3, 0.1 molar, ठीक है ना, तो 0.1 molar H2SO4 और 1 molar, consider 1 molar H2SO4 to neutralize 1 molar H2SO4, how much 1 molar KOH solution you, ये देखो, तो 1 molar means how many equivalent, ये जो होता है H2SO4 जो होता है H2SO4 KOH, इसका जो रिएक्शन होता है, दिस इज यू आर हैविंग ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इट विल रिएक्ट। लेकिन ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मलिटी, क्योंकि नॉर्मलिटी जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताते हैं। तो इसका जब 1 नॉर्मलिटी जब करोगे, सो बेसिकली दिस इज इन 1 मोलर, देन इसका नॉर्मलिटी क्या होने वाला है, दिस इज योर 2 नॉर्मल, ओके। एंड जो KOH के लिए क्या होता है, इसका मोलारिटी या नॉर्मलिटी सेम, तो इसीलिए क्या होता है, जब ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बेस रिएक्शन होता है तो ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, तो मतलब यू नीड टू कन्वर्ट जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो हम नॉर्मलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। तो नॉर्मलिटी में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट है, सो बेसिकली दिस H3PO4, इसमें कितना रिप्लेसेबल प्रोटॉन है वो देखना है, इसका बेसिसिटी कितना है वो देखना है। सो फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर यू नो, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो H3PO4 इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज यू आर हैविंग OH, दिस इज OH एंड दिस इज H, ये है H3PO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो बेसिसिटी कितना है, इसका जो बेसिसिटी, ये 2 रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, तो इसका बेसिसिटी क्या होने वाला है, दिस इज बेसिसिटी विल बी 2। तो इसका जो मोलारिटी क्या होने वाला है, दिस इज लाइक 1 मोलर व्हिच इज इक्वल टू, सो 0.1 मोलर व्हिच इज इनटू 2, तो
तो इसका जो नॉर्मलिटी क्या होने वाला है, दिस इज यू विल हैव 0.1 into 2, दिस विल बी द नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मलिटी, व्हाई वी आर कन्वर्टिंग नॉर्मलिटी, क्योंकि एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वो होता है इन gram equivalent. In gram equivalent, 1 gram equivalent it reacts with 1 gram equivalent of acid, it reacts with 1 gram equivalent of base. तो जो ग्राम इक्विवेलेंट में होता है तो ये मोलारिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं चलने वाला है, तो उसके लिए क्या है, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना। तो इसका बेसिसिटी पता होना चाहिए, जो ये जो H3PO4 इसका बेसिसिटी पता होना चाहिए। तो इसका जो बेसिसिटी है दिस इज योर 2। तो इसके लिए इसका जो नॉर्मलिटी, मोलारिटी के साथ जो नॉर्मलिटी का रिलेशन होने वाला है, सो दिस इज यू आर हैविंग 0.1 मोलर H3PO3 व्हिच इज इक्वल टू 0.1 into 2 into its नॉर्मलिटी। ठीक है, तो अभी देखो इसका जो है, जो KOH है, इसका नॉर्मलिटी मोलारिटी सेम है, क्योंकि इसका जो रिप्लेसेबल OH माइनस है कितना है, 1 है। ठीक है ना, सो बेसिकली दिस इज फॉर दिस केस योर नॉर्मलिटी इक्वल टू द मोलारिटी। तो इसलिए दिस इज द concentration, you can directly change this concentration 0.1 molar which is equal to 0.1 normal KOH। ठीक है, so now you can do the exactly, so basically equivalent, you can calculate the volume of KOH by using V1S1 equal to V2S2। ठीक है ना, तो दिस सेम, तो इसका जो वॉल्यूम है यू आर हैविंग 20 ml एंड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज यू आर हैविंग 0.1 नॉर्मल, सॉरी 0.2 नॉर्मल। सो नाउ 0.2 in 20 into 0.2 which is वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू V2, ये जो V2 कैलकुलेट करना है, V2 into सॉरी V2 into H2 इसको बता दिया गया, इसका है 0.1 मोलर which is equal to 0.1 नॉर्मल। ठीक है, 0.1 नॉर्मल। तो ये जो कैलकुलेशन करोगे तो देखो क्या आने वाला है, दिस विल गिव यू 40 m। समझ में आया? होप अभी क्लियर हो गया। जो एसिड बेस रिएक्शन है, और भी एक बार बताता हूं, जो एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है। सो बेसिकली 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड इट रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है ना, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वो नॉर्मलिटी होता है। तो इसलिए जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो उसका जनरली इफ नॉर्मलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द मोलारिटी, तो क्या होने वाला है, सबको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मलिटी वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका यू नीड टू चेंज इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, और उसके बाद यू कैन डू द V1S1। ठीक है, देखो ठीक है, मे बी यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस एक है, तो यहाँ से बताओ क्या होने वाला है। यस, गुड आफ्टरनून। The volume of chlorine is to be required there volume of chlorine at STP required। अच्छा ठीक है, चलो हम करेंगे। ओके, that is you need to how to find the basicity। basicity ये पता होना चाहिए, basicity how many replaceable proton you are having। जैसे क्या होता है ये देखना है रिप्लेसेबल प्रोटॉन कितना है, HCl इसका रिप्लेसेबल प्रोटॉन कितना है देखना है, H2SO4 इसका जो रिप्लेसेबल प्रोटॉन कितना है ये देखना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू डू। और देखना है जैसे उसका एसिड फ्रॉम द स्ट्रक्चर, यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर। जैसे H3PO3 इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो पता नहीं है, तो कैलकुलेट करना मुश्किल होने वाला है। ठीक है, चलो
So you are having this is I think ये गुरमीत तुमने जो the volume of chlorine at STP required to liberate all the bromines and iodine in 1 ml 0. ये क्वेश्चंस पूरा नहीं है. The volume of chlorine at STP required to liberate all the bromine and bromine and iodine in 0.1 molar each. ठीक है. तो ये देखो ये बैलेंस रिएक्शन करना पड़ेगा. So volume of the chloride will liberate, it will form iodine, and maybe end of this discussion so we'll discuss your question. ठीक है. चलो तो ये वाला जो क्वेश्चंस है देखो. So aluminium, this is your reaction 2Al 6HCl. This will produce Al3 plus. This is the reaction it has given. In the reaction ये बताया. So basically ये 11.2 liter H2 gas, 11.2 liter H2 gas will at STP is produced for every mole of HCl. ठीक है. ये देखो ये जो है at STP. So basically you are having from this balance equation you can say your 3 moles of H2 gas is liberating. 3 moles of H2 gas is liberating. 3 moles means you are having 3 into 22.4 liter. ठीक है. So now you say to now you need 11.2 liter of H2 gas, 11.2 liter which is equal to, so for 11 liter every mole. तो एक मोल के लिए क्या हो रहा है? So basically in 1 mole HCl that will produce 3 by 6 mole. 3 by 6 mole means 3 by 6 mole means you are having 0.1 0.5 mole. 0.5 moles means 11.2 liter. This is true. Then you are having 6 liter. Sorry, this is 6 liter of HCl is consumed in every 3 liter hydrogen is produced. So at STP again you are having at STP you are having 3 moles. Again the second question is you are having 36.2 liter of H2 is produced regardless of temperature and pressure. Regardless of temperature and pressure, the aluminium, every mole of aluminium. Okay, so this is also correct because if you think about 6 in terms of liter, if you express this one 3 mole, so basically 6 mole it will produce 3 mole, so 6 liters it will be 3 liters. Okay, but 36 points liter 33.6 liter H2 gas is produced regardless of temperature and pressure for every mole of aluminium that reacts. So again if you see every mole that means 1.5. This is like a 2 moles it produce 3 moles of hydrogen gas. So 1 mole it will produce 3 by 2. 3 by 2 means 1.5 mole. 1.5 moles means you are having 1.5 into 22.4, so which is equal to your 33.6. But 33.6 it will produce only at STP. Only at STP. Only STP you will have 33.6 liter. If regardless of temperature, क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्या होता है इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है. So this I think it will be the options because all are correct. This will be on incorrect. जो 67 gram of H2 at STP is produced every mole of for every mole aluminium is. That is, I think this question is wrong. Maybe the 67.2
at HTP is produced for every mole of no. So basically you are having T 6.73. So basically every mole you are having T by 2. T by 2 says that is equal to 1.2 mole. So one mole for every mole of aluminum that reacts, it will be every mole. So I think this question is wrong. Okay, so maybe I need to discuss, I need to check. 6.2 H2 gram at STP is produced for every mole of no. So this is, I think we need to check this one. Okay, let's move to the next question. This question is something wrong. I need to check. Okay, so let's talk about the parts per million. Parts per million क्या होता है? So parts per million, this is for dilute concentration. For any dilute concentration, we use parts per million. ठीक है? ये वाला क्वेश्चन शायद चेक करना पड़ेगा, चेक करके मैं बताता हूँ. ठीक है? The parts per million for dilute concentration. For dilute concentration, we use ppm. So parts per million, when you are having small part, so basically part of solute present in part of solution in 10 to the power 6 part. ठीक है ना? In every 10 to the power 6 part, how many parts of solute present? So total, this is the ppm we use to express very small concentration of solute. ठीक है? For every the part, very small part, to express the moles concentration we use ppm. So the part of solute upon part of solution, okay, in 10 to the power 6 part. Or we can express this one. Then this reaction repeat please from the starting. Okay, so maybe the reaction is something wrong. I'll check and I'll get back. Okay, in the next class I'll talk to you. So ये जो होता है, so again the part of solute, again we can express this in like a mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6. Okay. So this is how we express ppm, parts per million. So mass of the solute upon mass of solution into 10 to the power 6. They say we express in the fluoride ion concentration. They say drinking water होता है. So basically this is 1 ppm of fluoride ion present. So 1 ppm fluoride. So basically then in one part, so basically 1 part of fluoride present in 10 to the power 6 part of what? So basically in every so basically every part, so basically you can think about this is like a ppm, the mass of the solute that is present in upon mass of your solution into 10 to the power 6. So basically ये जो होता है ppm, if you are having 1 microgram is of fluoride is present in 1 ml. So 1 ml, that is your 1 gram. So 1 microgram means 10 to the minus 6 grams fluoride if it is present in 1 ml solution. So then we can call like this is you are having 1
ppm. Okay, so again the same way you can say like if 1 milligram present, if you are having 1 milligram present in 1 liter solution, then also we can call this is like a 1 ppm. Okay, so here ppm, it is very small unit. It is very small unit. To express very small concentration we use ppm, parts per million. तो मिलियन में, मिलियन मीन्स 10 to the power 6, ये मिलियन पार्ट्स में कितना है, जैसे ये ऐसे लेते हैं. सो बेसिकली ये जो है fluoride concentration 1 ppm, that means you are having 1 microgram present in your having 1 ml. Okay, so 1 ml means you are having water का जो density होता है 1 gram per cc, 1 gram per cc. So in 1 gram, when you are having 1 microgram fluoride, then we call it is 1 ppm. ठीक है. The same way you can express if 1 milligram of fluoride is present in 1 liter solution. So again, if you say, so this is you can say 1 liter, again 1000 gram. So basically 1 milligram. So this is, you can say like this is 10 to the power minus 3 gram, which is present in 10 to the power 3 gram. So that means your 1 gram present in 10 to the power 6 gram. ठीक है. This is how we express. क्या समझ में नहीं आ रहा है? Sir, please repeat. यही देखो ना. So basically your 1 gram present in 10 to the power 6 gram. वो ही होता है. तो in 10 to the power 6 पार्ट में कितना प्रेजेंट है वही बताते हैं. So 1 ppm, you are having 1 ppm fluoride. 1 ppm fluoride इसका मतलब है you are having 1 part of fluoride that is in 10 to the power 6 part. So if you think about like a 1 microgram fluoride, तो 1 ppm इसका मतलब है 1 microgram fluoride present in 1 ml. Microgram means you are having 10 to the power minus 6. So 10 to the power minus 6 gram present in 1 ml. 1 ml क्या होता है? 1 gram per cc. तो 10 to the power minus 6 gram present in 1 gram. तो again you can say like 1 gram present in 10 to the power 6 gram. ठीक है. ऐसे ही the same way that it will be 1 ppm. If you express in terms of liter, तो क्या होने वाला है? 1 milligram present in 1 liter. ठीक है. 1 milligram present in 1 liter. So this is how we express ppm. So जैसे small concentration जैसे fluoride contamination और एटमॉस्फेयर में जैसे पॉल्यूटेंट होता है, तो उसका भी बहुत माइन्यूट अमाउंट में रहता है, बहुत कम अमाउंट में रहता है. तो उसी को हम क्या करते हैं, इन ppm we express in ppm. ठीक है. I hope now it is clear. So we are having some other concentration term. This is called the oleum. Oleum क्या होता है? Actually oleum होता है, ये होता है सल्फ्रिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है, इसी को बताते हैं oleum. ठीक है ना. तो oleum, इसके लिए क्या होता है, oleum का concentration हम बताते हैं. We are having generally, ये क्या बताते हैं, when you are having 105% oleum. ठीक है. You are having 105% oleum. That means if you take 100 gram of oleum, if you take 100 gram of oleum by adding water, तो ये जो oleum क्या करते हैं, oleum से हम एसिडिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, उसमें वाटर ऐड करके. So if you take 100 gram of oleum, so 105% oleum means if you take 100 gram oleum, out of this you will get 105 gram of एसिडिक एसिड. ठीक है. तो ये जो है oleum का परसेंटेज जो 105, इसका मतलब ये बताते हैं
जो इन ओलिया जो उतना परसेंट, मतलब इफ यू टेक 100 ग्राम यू विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फ्रिक एसिड। तो यहाँ पे यू आर हैविंग 105% ओलियम, इसका मतलब है यू आर हैविंग 100 ग्राम, इफ यू टेक 100 ग्राम ओलियम देन यू विल गेट 105 ग्राम ऑफ सल्फ्रिक एसिड। ठीक है, the same way if you take, like if you are having 108% oleum, 118% oleum, तो इसका मतलब है if you take 100 gram of oleum then you will get, if you dilute it, if you adjust with the sufficient amount of water that you need, so maximum you will get 118 gram of sulfuric acid. ठीक है ना? So this is how the oleum concentration we use, and mostly this is oleum we use to preparation of sulfuric acid. तो इसमें से हम बता सकते हैं ओलियम का कंसंट्रेशन से जो उसमें से कितना सल्फ्यूरिक एसिड हम मिल सकते हैं और पा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे जो होता है अनदर कंसंट्रेशन टर्म फ्रीक्वेंटली वी यूज, दैट इज वॉल्यूम। तो ये होता है मोस्टली इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, देन इसका जो बताते हैं, जिसका जो कंसंट्रेशन टर्म है ये होता है वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम, कोई भी एक नंबर होता है उसके बाद एक वॉल्यूम आता है। तो ये क्या बताते हैं 10 वॉल्यूम, इसका मतलब है इफ यू टेक 1 ml of H2SO4 H2O2, this will give you, अपन डिकम्पोजिशन जो H2O2 होता है, अपन डिकम्पोजिशन ये क्या पढ़ते हैं H2O plus O2, ओके, H2O plus O2, सर ओलियम रिपीट, ओलियम यही है। तो बेसिकली दिस इज ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसमें से वाटर ऐड करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। जैसे ये देखो, ये जो होता है ओलियम क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना? तो इसमें से क्या करते हैं वाटर ऐड करके, इफ यू ऐड वाटर देन यू विल गेट H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक ओलियम से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ये ओलियम का यूज होता है। तो उसका जो परसेंटेज यूज एक्सप्रेस करते हैं, सो बेसिकली इफ यू हैव 118% oleum, इसका मतलब है if you take 100 gram of oleum by adding water, sufficient amount of water, maximum you can get 118 gram of sulfuric acid। यही है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम व्हेन यू आर हैविंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड आफ्टर डिकम्पोजिशन इट प्रोड्यूस वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना? तो ये 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है, इफ यू डिकम्पोज 1 ml of H2O2 it will produce 10 ml of oxygen gas at STP। इसका जो वॉल्यूम होने वाला है दिस विल बी 10 ml at STP। ठीक है, सो you are having 10 volume of H2O2, that means if you decompose 1 ml of H2O2 it will give 10 ml of oxygen gas at STP। Same way if you are having 20 volume H2O2, this will give you like 1 ml, if you take 1 ml of H2O2 it will produce 20 ml of oxygen gas at STP। ठीक है, और you can take like if you express this one in terms of liter, तो क्या होने वाला है, this will be 20 volume of hydrogen peroxide। इसका मतलब है if you take 1 liter of hydrogen peroxide it will give you 20 liter of oxygen gas at
STP, ठीक है ना। So this is how we express the volume concentration. Yes, so basically it depends which volume you are expressing. So volume इसका मतलब है if you take 1 ml then you will get 20 ml, but if you take 1 liter then you will get 20 liter. It is in case of 20 volume हाइड्रोजन peroxide. ये जो वॉल्यूम होता है ये सिर्फ हाइड्रोजन peroxide के लिए एक कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है, ठीक है। चलो we are having questions जैसे 10 ml of solution H2O2 on decomposition it gives 1500 ml of O2 at NTP. The H2O2 has volume strength क्या होने वाला है, इसका क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ होने वाला है, ठीक है। ये देखो अगेन ये जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है बेसिकली इफ यू टेक 1 ml तो 10 you are having 5 volume, suppose 5 volume means if you take 1 ml H2O2, okay, upon decomposition it will give 5 ml of oxygen gas O2 gas at STP, ठीक है। So then now you are having, yes, very good, you are having 100 ml solution on decompose it gives 1500 ml of O2 at NTP or STP. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, so again you can calculate like this. So in terms of like a in 100 ml it produce 1500 ml of oxygen gas, ठीक है ना। Then 1 ml how much it will produce, it will produce 1500 upon 100 ml, ठीक है। This will give you 15 volume. So that means the C will be the option. तो यहाँ पे क्या होता है जो वॉल्यूम ये सेम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है और हम और मतलब सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रेंथ होता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं वॉल्यूम यूज करते हैं, ओके। So now we are having another question. Yes, 15 volume will be the correct answer. The volume of 20 volume hydrogen peroxide it requires to get 55 liters of O2 at STP. ठीक है ना? Okay, so now next question. एनटीपी क्या होता है, एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी जो होता है एक्चुअली देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन एनटीपी एंड एसटीपी, लेकिन तुम्हारा कभी कभी ये कंसीडर कर लेते हैं एनटीपी व्हिच इज इक्वल टू एसटीपी और इक्विवेलेंट टू एसटीपी। तो इसका मतलब है कोई भी गैस का एसटीपी में जो वॉल्यूम होने वाला है एनटीपी में भी वॉल्यूम ऐसा होने वाला है। एक्यूरेटली ये सेम नहीं है, लेकिन फॉर आवर कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली वी कंसीडर एनटीपी और एसटीपी ये सेम होता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। चलो जो सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 required to get 5 liters of oxygen at STP, ठीक है। व्हाट इज सर वॉल्यूम बताया ना, जो सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 H2SO और SO3 का जो मिक्सचर होता है वही होता है वॉल्यूम। ठीक है, चलो ये देखते हैं। सो बेसिकली 20 वॉल्यूम्स, नाउ यू सी 20 वॉल्यूम्स इसका मतलब है we can get 20 ml. So basically we can get 20 ml 20 volume. So in terms of ये लीटर पूछ रहा है, इसका मतलब है 20 लीटर, 20 वॉल्यूम मीन्स 20 लीटर
20 liter O2 we can produce from 1 liter. Okay, so हमारे पास कितना लीटर चाहिए? 5 लीटर चाहिए. So 1 liter we can get 1/20. So 5 liter चाहिए. So basically this will give you 5. For 5 liter oxygen we need 5/20. 1 into 5/20. So this is 1/4. 1/4 liter. 1/4. This is your need liter. ठीक है. So 1/4 लीटर इसका मतलब है कितना होने वाला है? This will be give you 250 ml. ठीक है. तो दिस 250 ml will be the correct answer, क्योंकि ये जो है 20 वॉल्यूम, इसका मतलब है 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस we can get at STP. So 20 liter volume of oxygen gas we can get from 1 liter of hydrogen peroxide. ठीक है ना. तो ये 5 लीटर पानी के लिए 1/4 लीटर चाहिए. तो 1/4 लीटर इसका मतलब ये है 250 ml. ठीक है. चलो नेक्स्ट टुडे विल डिस्कस अबाउट 100 नहीं होने वाला है. 100 नहीं होने वाला है. दिस विल बी 250 ml. ठीक है. So the principle of एटम कंजर्वेशन, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. कल क्वेश्चन लेके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. ये जो बताया था तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये होता है एक्चुअली कोई भी जब रिएक्शन होता है, इन एनी रिएक्शन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो वी आर हैविंग मीथेन. ठीक है. सो मीथेन, इफ यू बर्न मीथेन, क्या होने वाला है? कंबशन. हम इसको जलाएंगे, मीथेन को जलाएंगे तो क्या होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके. जैसे हम इसका जो बैलेंस रिएक्शन करते हैं, इफ यू डू द बैलेंस, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होने वाला है? दिस विल गिव यू 2H2O CO2. ठीक है ना. तो ये जो बैलेंस रिएक्शन से हम क्या बता सकते हैं? इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट साइड सो बेसिकली यू नीड 2H2. ठीक है. तो रिएक्टेंट साइड में जितना एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में ही उतना ही एटम्स है. इफ यू थिंक अबाउट इन मीथेन, कार्बन एटम हमारे लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 है. एंड प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1 है. ठीक है. ऑक्सीजन एटम कितना है? रिएक्टेंट साइड में वी आर हैविंग 4 और प्रोडक्ट साइड में कितना है? टोटल 4. तो ये हाइड्रोजन भी कितना है? इन लेफ्ट साइड वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन एटम एंड राइट साइड वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन. तो कोई भी रिएक्शन में क्या होता है? जो नंबर ऑफ एटम इज कंजर्व. जैसे हमने ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, जो एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना. तो वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ये जो होता है ये सेम रहता है. ठीक है ना. तो ये जो प्रिंसिपल, ये पीओएसी से हम आसानी से कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं. जैसे कितना उसका जो कन्वर्शन हो रहा है. जैसे इसका एक आसान जो सिंपल है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं. कोई भी एटम, तो यहाँ पे कार्बन पहले कंसीडर करते हैं कार्बन. ठीक है. तो इसका जो मेन जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में कार्बन कितना एटम है? ये जो मीथेन है, मीथेन में कार्बन है. कितना कार्बन है? 1 एटम कार्बन है. 1 एटम कार्बन. ठीक है. सो इफ वी अप्लाई, तो ये जो पीओएसी, ठीक है, तो ये एक एक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है. एक साथ सब हम यूज कर नहीं सकते. सिर्फ एट ए टाइम हम 1 एटम के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कार्बन एटम, ये जो है कार्बन एटम, यहाँ पे क्या है? तो दिस इज योर नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो ये मॉलिक्यूल जो मीथेन मॉलिक्यूल बनते हैं, इसमें कितना कार्बन एटम है? ये होता है 1 कार्बन एटम. तो नंबर ऑफ एटम इनटू मोल ऑफ द मीथेन. मोल ऑफ मीथेन, इसका मतलब क्या है? वेट ऑफ मीथेन अपॉन वी आर हैविंग मास, मोलर मास ऑफ मीथेन. ठीक है. कितना ग्राम वेट, कितना वेट हम मीथेन ले रहा है, उसका मोलर मास कितना है? दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो कार्बन है, तो कार्बन कितना है? 1 बन रहा है. तो बेसिकली अगेन 1 into
1 into this is you are having weight of carbon dioxide upon molar mass of carbon, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यू सी 1 into this is your number of mole, this will give you number of mole, ठीक है ना। तो number of mole of atom, number of moles of atoms in reactant side, in reactant, number of moles of atoms reactant atoms reactant, which is equal to, again this will be number of moles of atoms in product, ठीक है। So now you see, if you see if you take like number of mole, if you take one mole का weight कितना है 14 ग्राम, if you take 14 इसका मोलर मास कितना, सॉरी 16, तो इसका जो weight if you take 16 ग्राम and if you इसका मोलर मास 16, so basically 1 mole, okay। again ये जो weight of carbon dioxide कितना बनने वाला है, this is your 44 ग्राम and your molar mass 44, so then your number of carbon atom will be the same, ठीक है। तो इसमें डिटेल में हम कैसे एक्चुअली दिस इज फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन, कैसे जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जैसे कि एटम कंजर्व रहते हैं, हम कितने भी स्टेप करें, सो फाइनल स्टेप में टोटल जो है इफ एटम डज नॉट प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, एक एटम से हमारा एक से ज्यादा मॉलिक्यूल और कंपाउंड नहीं बने, तो दैट टोटल, सो बेसिकली रिएक्टेंट्स atom present in reactant which is equal to the atoms present in the product, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल हम यूज करके आसानी से कोई भी क्वेश्चन, जैसे रिएक्टेंट का वेट, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चाहिए और इतना रिएक्टेंट है उसमें से कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है, सो वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस वन टुमारो विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑन पीओएसी, ठीक है। आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं एंड गुड बाय फॉर टुडे।